Good morning to all of you. Is the screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to continue the last class problem. So yesterday we have seen about the non-sway analysis of frame, and we have carried out the non-sway analysis, and we have find out the non-sway force. So this S is equal to 20.01 kilonewton. Okay. So now the second part of the analysis, it is the sway analysis. So we have applied the sway force in the horizontal direction. So you can see that figure here, you can see here. Okay, so this is a sway frame due to this force, that is S dash. Okay, don't consider K here. Okay, so this sway force I have used this as S dash, which I have called it as a sway force, and S is the non-sway force. So due to this force, the frame will get deflected like this. Okay, so now we have to analyze this frame. Sway we have assumed as delta in the rightward direction. तो ये जो sway हमने displacement assume किया है, with the help of this delta we'll have to find out the fixed end moment developed in the column AB and column CD. तो ये जो fixed end moment रहेंगे, that will be assumed moment. Okay, so first part over हो गया, then we will go for the second part. तो इस ये फ्रेम भी आप निकाल लो कॉपी में, ठीक है, और इसमें अपने को मोमेंट को कंसीडर करके एनालिसिस करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट again with the same process, we have to find out HA2 and HD2. Okay, and then we'll find out the sway force. Okay, so one by one we will see this, how to carry out this analysis. So the second part is, we will assume that let the frame will sway by delta towards right. Okay, column is AB, it is vertical column, so that will get deflected towards right by an amount of delta, as you can see in the figure. Okay, so by assuming arbitrary sway, so we'll assume the imaginary sway here. Okay, so there will be the displacement only in the column member, there will be no displacement in the beam member BC. ओके, तो कॉलम ए बी में कितना डिस्प्लेसमेंट अपन ने अज्यूम किया है? ओके, वर्टिकल मेंबर है तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दैट मेंबर, दैट मींस राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट. तो मेंबर ए बी में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है और मेंबर सी डी में डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डेल्टा, एंड फॉर मेंबर बी सी द डिस्प्लेसमेंट इज 0. ओके, सो देयर विल बी नो फिक्स्ड एंड मूवमेंट डेवलप्ड इन मेंबर बी सी. Okay, now as you know that if any one end of the member is going to be displaced by delta, the moment will be developed at both end of the member will be same with an amount of 6CR delta by L square, and that is anti-clockwise moment will be developed. Okay, so that moment you have to consider that वो moment displacement की वजह से developed होंगे, तो वो मोमेंट अपन फाइंड आउट करेंगे. देन हाउ इट इज टू बी फाइंड आउट? नाउ इट इज फिक्स्ड एंड मूवमेंट, तो पहले फिर से स्टेप वही फॉलो करना है आपको. फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मूवमेंट ड्यू टू स्वे, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हियर 6CR डेल्टा बाय एल स्क्वायर, फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी विल बी इक्वल टू फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी ए होगा, विच इज इक्वल टू माइनस 6CR डेल्टा बाय एल स्क्वायर. Okay, now here the value of I is given for all the member, that is you can see that for member AB and for member DC the I value is same, and for member BC it is 2I. तो accordingly जो value दिया जाता है I का, उसको आपको यहाँ से replace करना है. Okay, I अगर आपका 1I है तो I will be 1, if it is 2I we'll have to replace I with 2.
Okay, now EI delta value we have to assume. Okay, so in such books or if you refer the notes, you can see that they will directly assume the value of 6EI delta by L square is 1000 or 100 because it is arbitrary sway. आर्बिट्री स्वे की वजह से जो मोमेंट्स भी रहेंगे वो आर्बिट्री रहेंगे, इमेजिनरी मोमेंट्स निकलेंगे, फिर उसको करेक्शंस अप्लाई करके विल गेट द करेक्टेड मोमेंट. तो ऑलवेज we will assume the value of EI delta will be equal to 1000. You assume always EI delta equal to 1000. In some books you will find the different value, so might be the value of fixed moment will be different, तो sway moments भी different आएंगे. Okay, but उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली द फाइनल मोमेंट आपके सेम आएगा, करेक्शन फैक्टर भी डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, सो हियर आई हैव अज्यूम्ड द EI delta value is equal to 1000. So I'll calculate the fixed moment AB will be same as fixed moment BA. Okay, at both the end the negative moment will be developed. Okay, so I'll put the value of EI delta is 1000, and for member AB the I value of member AB is 1. Okay, as you can see the problem figure, so minus 6 into 1000 divided by L square, 6 square, you'll get minus 166.67 kilonewton meter. Similarly, you can find out the fixed moment CD is equal to fixed moment DC is equal to minus 6EI delta by L square. Both the member the I value is same, length is same, इसीलिए आपका जो मोमेंट भी आएगा वो सेम आएगा. ओके, फॉर कॉलम ए बी एंड फॉर कॉलम सी डी. ओके, यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि आई वैल्यू आपको चेक करना है, अगर डिफरेंट है तो सिर्फ यहाँ पे आई आपका रिप्लेस होगा, तो विल गेट द बोथ द वैल्यू विल बी डिफरेंट. ओके, देन फिक्स्ड मोमेंट बीसी विल बी इक्वल टू फिक्स्ड मोमेंट सीबी, जीरो रहेगा because there is no displacement in that member. There is only displacement in the column member because column is vertical member. अगर out of this any one of the member अगर inclined है तो you'll get the displacement in the beam also. So such type of the problem we'll see afterwards. तो यहाँ पे in every case if the both the leg is vertical leg, displacement in the beam will be zero, so moment in the beam will be zero, and always the moment जो रहेगा minus 6EI delta by L square, और EI delta always assume 1000. Okay, then accordingly find out this value. Now we'll consider this moment and we'll carry out the sway moment distribution. Distribution factor will be same रहेगा, already we have calculated, so no need to go with that step. Okay, so distribution factor same ही रहेगा. So our after finding out the fixed moment जो अपन ने sway से निकाले हैं उस moment को consider करके we'll carry out the sway moment distribution. So then the next step will be you just prepare this sway moment distribution table. Okay, again we'll have to go with the same distribution. What is the change here? The moment is changing. ये जो moments आपको मिल दिख रहे हैं ये मोमेंट है ड्यू टू स्वे की वजह से, और पहले नॉन स्वे एनालिसिस में जो फिक्स्ड मोमेंट निकले थे वो थे फिक्स्ड मोमेंट ड्यू टू लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग. दोनों को अपन ने सेपरेटली कंसीडर किया है. तो अगेन यू गो विद द टेबल. ओके, सो अगेन एज यू नो द प्रोसीजर हियर, राइट डाउन जॉइन, देन राइट डाउन मेंबर, देन राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. ऑलरेडी इट इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2. देन फिक्स्ड मोमेंट, अभी ये स्वे की वजह से जो फिक्स्ड मोमेंट आए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी डी एंड डी सी. अभी यहाँ पे स्वे की वजह से कॉलम में मोमेंट आ रहा है, ये जो मोमेंट आ रहा है ये स्वे की वजह से है. ओके, तो यहाँ पे फॉर मेंबर डी सी द फिक्स्ड मोमेंट इज minus 166.67. So again यहाँ पे this end D it is a hinge end. Okay, in the given problem. So as you know that at the hinge end the bending moment is always 0. Hello, yes. तो आपको क्या करना पड़ेगा? First of all you have to release the joint. Okay, so how you can release the joint?
by applying a correction. Okay, how much correction you will apply here? यहाँ पे moment है -166.67, so correction will be of +166.67. यानी यहाँ पे अपन ने क्या किया, we will make this moment here 0 because bending moment is 0 if the end D as the end D is hinged. If it is fixed, then no need to apply any correction, no need to release that joint. लेकिन hinge end है, इसीलिए यहाँ पे माइनस मोमेंट है, विल अप्लाई द प्लस करेक्शन, विल मेक दिस एज 0 मोमेंट एंड एट द सेम टाइम हाफ मोमेंट विल बी कैरिड आउट टू इट्स फार एंड. ओके, तो कितना करेक्शन अप्लाई किया? वी हैव अप्लाइड 166.67. ओके, तो हाफ मोमेंट विल बी कैरिड आउट टू इट्स फार एंड. व्हाट इज फार एंड? फार एंड इज C, so 83.33. So this is the corrected moment. We have a half moment we have carried out here. So you will get the corrected moment in member CD. Okay, so actual moment जो है CD पे, that is -166.67 plus 83.33. So what is the corrected moment for member CD? It is -83.33. Okay, so this is the initial fixed moment and these are the corrected fixed moment. Okay, so यहाँ पे AB, then write down this moment again, and here the corrected moment for member CD is this, and DC we have make it 0. Again, you know the procedure. Go for cycle 1. Okay, balance joint B, balance joint C. तो ये already मैंने आपको बताया है. Okay, यहाँ पे what is the total moment at joint B? It is -166.67. Correction होगा plus into distribution factor. Okay, so you just if you are having calculators with you, you calculate this value and check your value with my values. Okay, so plus 166.67 into 0.29 will get 48.33. Okay, so ये moment अपन ने distribute कर दिया है in member BA and BC. Then similarly for joint C. Okay, is there any doubt here? Any one of you, if you are having any doubt, you ask me here, because you have already done this. This is not new for you. Just moment distribution अपने पढ़ा है, सिर्फ अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बैलेंस हो गया, उसके बाद we are going for the carryover factor. Half moment will be carried out to its far end A. Okay, then again you have to go for balancing, then carry over and then balancing. कितनी cycles आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है? Only 3 cycles. Balance, carry over moment, balance, carry over moment, and balance पे आपको stop करना है. Balance पे आपको stop करना है every time. ठीक है, इसके आगे आपको नहीं जाना है because it will require more time, because you have to go for 2 tables, 2 analysis करना है. यहाँ तक आपको stop करना है and then you have to find out the sway moments. Okay, so these are your sway moments. So to find out the sway moment, again you add all this. So -166.67 plus 24.16 minus 4.59. Okay, so ये आपको -14.71. Add all the vertical values. Then similarly for member BA -121.0. Similarly for member BC plus 121. यहाँ पे equilibrium of joint B should be satisfied. Okay, ये -121 है, it should be plus 121. Okay, then you can say that your answer is corrected. तो ये जो sway moments है, or whatever the moments we are getting, that is the assumed moment we are getting. Okay, arbitrary moment we are getting because we have assumed the displacement is delta and we have assumed the value of ER delta that we have assumed. Some of you will assume the different value, so maybe this value will be different. Okay, so and for member CB where you got 74.83 minus 74.83 and for member DC it is 0. Okay, so ये by carrying out this moment distribution we got the sway moments. We got the
sway moments. Okay. Now after this, what you have to do? We have to calculate the sway force, that is S dash. Okay. तो using this moment, ये जो मोमेंट आ रहे हैं आपको स्वे मोमेंट ए बी पी ए पर, ये मोमेंट को कंसिडर करके आपको स्वे फोर्स निकालना है, दैट इज एस डैश फोर्स, दैट इज एस डैश फोर्स. ओके. तो अगेन by referring figure 1c, okay, I have not drawn the figure here. Directly I have drawn the free body diagram of column AB and free body diagram of column CD. Okay, क्योंकि to get the sway force S dash, you have to find out the value of reaction at A and reaction at D. Reaction at D. So HA2 I have denoted it by HA2 and HD2. Same process we have to carry out. Okay. So again you plot the free body diagram of column AB. Show all the reactions here. Like A is fixed support. तो यहाँ पे 3 reactions ही रहेंगे, HA2, VA2 and moment. लेकिन I have not shown this vertical reaction क्योंकि इसका moment B पर 0 रहेगा and I am not interested to find out the vertical reaction. Okay. And at B again वहाँ पे HB रहेगा, VB रहेगा और moment रहेगा. So either you find out HA or HB, one of the same thing. Okay. And one thing you keep in mind that when you plot or draw the free body diagram of column AB in sway analysis, okay, what is the change here? We are not considering the loading effect. Means loads, whatever the external loading acting on your frame, that we are not showing in sway. Okay, already it is considered in the non-sway. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, when I have plot this video of this column AB, I have not shown that 40 kilonewton loading. Okay, why not? Why I have not shown it? Because it is already considered in non-sway analysis. Okay, loading को अपन ने separate कर दिया, sway को अपन ने separate कर दिया. So you don't have to consider any external loading acting on that frame. That is only the due to the displacement. So this 40 kilonewton external loading I have not shown here. Maybe that loading it is acting on the member या joint पे है, but वो non-sway में consider किया है, don't consider in sway analysis. Okay, तो यहाँ पे जो free body diagram है, that I have shown the reaction HA2 and AB पे moment कितना आया है? AB पे मोमेंट ये 14.71 है कि कितना है, चेक करो एक बार. AB पे फोर्स कितना, सॉरी मोमेंट कितना रहा? आई थिंक इट इज 147. Is there anyone who is calculating? Yes, it is 147. Okay, तो वहाँ पे मैंने गलती से 14.71 लिखा है. आप, मुझे पता है कि कोई भी कैलकुलेट नहीं करता, इसलिए no one have told me this my mistake here. Okay, तो यहाँ पे आप करेक्शन करो -147.1. ओके, -147.1 यहाँ पे सही बताया है. ओके, तो जो AB पे sway मोमेंट आ रहा है, ओके, when you calculate or you draw the free body diagram, you have to show these moments also. ओके, रिएक्शन एंड मोमेंट. तो मोमेंट कौन सा? sway मोमेंट, नॉट अ फिक्स्ड मोमेंट. ओके, तो ये मोमेंट माइनस है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज बताया है 147.1. ओके, देन फिक्स्ड मोमेंट, सॉरी स्वे मोमेंट BA -121, ये भी माइनस है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज 121.0. ठीक है, नो, डोंट कंसिडर 40 kilonewton loading here. Then you take the moment at B and find out reaction HA2. Okay, so your equation will become minus HA2 into length is 6 anti-clockwise and both the moments are minus.
सो -121 -147 यहाँ पे करेक्शन कर लेना है आपको. उसके बाद आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ Ha2. देन सिमिलरली plot the free body diagram of column CD. Okay, so column CD at end D it is hinge end, moment है 0, moment is 0. So reaction HD2 और CD पे कितना moment आ रहा है -74.83. This is the moment along CD. So it is minus, so I have shown it in the anti-clockwise direction. Okay, again you take the moment at C. So you'll get the reaction HD2 is equal to minus 12.47 kilonewton. So reaction मिल गया. Okay, then how you can calculate this sway force? What equation you will get? How you can calculate this S dash force? Again you consider the entire equilibrium of the frame by considering figure 1C. Already I have shown it earlier. So you refer that figure and tell me the equation. What equation you will get to find out that sway force? Yes. This force is there. This is S dash. Okay. And your frame is get deflected like this. And here there is reaction Ha2 and this is reaction HD2. Okay. So now you will consider this entire equilibrium of this frame and tell me the equation. So which equation you will use? Summation Fx equal to 0. Okay. So what equation you will get here? This is the sway frame. We have applied this force S dash. So what equation? Add all the horizontal forces. So this is your Ha2, this is HD2, and this is S force, S dash, that is the sway force. Yes? Any one of you? What equation you will get here? क्या इक्वेशन मिलेगा? सुनाई नहीं दे रहा क्या? To calculate this force, which equation you will get? Yes. How you will get that S dash force? Or you calculate that value? I will wait some time and tell me the answer. From section A, from section B, no one is there. Ma'am, S dash equals to 57.152. Okay, क्या इक्वेशन आपने लिखा? क्या इक्वेशन लिखा? Ha2 minus HD2 equals to minus S dash. नहीं, Ha2 माइनस क्यों? माइनस वैल्यू आ रहा है. Plus HD2. Ha2 प्लस HD2 प्लस S डैश. S डैश की डायरेक्शन राइटवर्ड है ना? तो पूरी प्लस होगी. Ha2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस में पुट करो. डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं. HD2 की
माइनस में पुट करो एस डैश राइट में एंड नो नीड टू राइट दैट एक्सटर्नल लोड प्लस 40 ऑलरेडी। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शंस और ये फोर्स इतना ही आएगा। ओके, तो दैट यू कैन सी हियर एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट दिस इक्वेशन S dash plus HA2 plus HD2 equal to 0, then you'll get S dash is equal to 57.153 kilonewton। तो ये मिल गया अपने को स्वे फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट विल फाइंड आउट दी स्वे करेक्शन फैक्टर। तो एज यू नो दैट S that is non sway force is equal to K into S dash, है ना। ये फोर्स इज नथिंग बट K इंटू एस डैश। ओके, तो K इंटू एस डैश करोगे तो आपको ये नॉन स्वे फोर्स मिल जाएगा। तो अभी इसमें आपको S की वैल्यू पता है नॉन स्वे फोर्स, नॉन स्वे एनालिसिस में, और S डैश की वैल्यू पता है दैट इज स्वे फोर्स। नाउ यू हैव दिस इक्वेशन K इज इक्वल टू S बाय S डैश, यू विल गेट दी स्वे करेक्शन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? स्वे करेक्शन फैक्टर, एंड इट इज applied to their sway moment। इसलिए यहाँ से आफ्टर फाइंडिंग आउट S and S dash value, find out the correction factor। So S is your non sway है, S is your non sway force। Okay, तो this non sway force divided by sway force, so non sway की वैल्यू 20.01 थी, find out the correction factor। तो correction factor आपको मिल रहा है 0.35। करेक्शन फैक्टर आपको कितना मिल रहा है? 0.35। ठीक है, तो अगर आप K इंटू एस डैश करोगे दैट मीन्स K इंटू 57.153 विल गेट 20.01। ओके, तो ये मिल गया। उसके बाद वंस विल गेट दी स्वे करेक्शन फैक्टर, यू फाइंड आउट दी फाइनल मोमेंट। ओके, तो हाउ विल गेट द फाइनल मोमेंट? नॉन स्वे मोमेंट प्लस K इंटू स्वे मोमेंट। ये इक्वेशन है नॉन स्वे मोमेंट्स प्लस K इंटू स्वे मोमेंट। फॉर एवरी मेंबर यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल मोमेंट। तो नॉन स्वे मोमेंट में नॉन स्वे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपन ने जो बनाया है उसमें लास्ट में जो मोमेंट्स मिले दैट इज AB पे मोमेंट है -26.01 प्लस करेक्शन 0.35 इंटू स्वे मोमेंट -147.1। कितना मोमेंट मिला अपने को? -77.49। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल मोमेंट फॉर ऑल द मेंबर्स AB, BA, BC, CB, CD एंड DC। ओके, तो BA में -3.9 मिल रहा है, तो BC में +3.9 ही मिलना चाहिए। इक्विलिब्रियम ऑफ B and C should be satisfied। Okay, so then you can say that your values will be corrected। Okay, so if you go with this process and calculation mistakes नहीं हो रही है आपकी, तो you'll get the right answer। K factor can be different, okay, but your final moments same रहेंगे। Okay, तो CB you'll get 38.454, then CD -38.54, then MDC moment at DC hinge end it is 0। Okay, so this is the problem of the sway analysis of frame using the moment distribution method। उसके बाद अपन क्या करते हैं? we are plotting the bending moment diagram। तो फाइनल मोमेंट AB माइनस आ रहा है, BA माइनस प्लस। ओके, and we'll consider this moment and we are drawing the bending moment diagram। Okay, so this is the end of the first problem। when you solve this, जब आप उसको solve करोगे it may take some time because you have to go for 2 moment distributions। Okay, so I hope that कि आपको समझ में आया होगा। Similarly, we can solve the other type of the problem। Same steps आपको follow करना है। Non-sway analysis, sway analysis, find out non-sway force, sway force, then find out correction factor, then find out the final mode। Okay, and if you go with the corrected way, your answer will be 100% right।
So up to this, if any one of you have any doubt, you can clear your doubt. Only the change of the problem will be, there will be the type of loading will be different. ओके तो इसके लिए आपको जो भी लोड केसेस है, कोई भी टाइप की लोडिंग हो सकती है, यूडीएल पॉइंट लोड, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैरिंग लोड भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है, तो दैट ऑल्सो आपको लर्न करके हर एक इसका फिक्स्ड मोमेंट आपको ध्यान में रखना है. ओके अगर आप स्टार्टिंग स्टेप में ही मिस्टेक करते हो, मतलब फिक्स्ड मोमेंट ही आपने गलत निकाले, तो बाकी पूरा प्रोसेस भी अगर आपका सही है, फिर भी आपके आंसर्स रॉन्ग होंगे. ओके सो इज देयर एनी डाउट? Should I explain any one of the step or you got it? Understood. ओके इसमें आपको मतलब ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट ही नहीं है, ये सिर्फ ये थोड़ा लेंथी है. Then you can plot the bending moment diagram. Okay, AB, BC and CD. Member AB fixed end moment is anti-clockwise, BA is again anti-clockwise, BC clockwise, CB clockwise and CD anti-clockwise and DC पे moment 0. You'll get the bending moment diagram like this. Okay. So up to this you have to solve the problem. So this is I have finished the first problem. In the next class I will take the second problem. Okay, I will cover the overhanging portion of that beam, and again one more problem I will cover in the next class, and then I will go for the with one leg inclined frame. यहाँ पे two type of the problem अपन cover करेंगे. Okay, both the leg vertical and one leg inclined frame. Okay, so here I will stop today. Don't leave the class.